Example of protozoan parasites: ant amoeba, which is a amoeba; giardia, which is a intestinal flagellate; trichomonas vaginalis, it is a genital flagellate; leishmania and trypanosoma, these are hemoflagellates. Okay. Then malarial parasite, toxoplasma, cryptosporidium, cyclospora, cystoisospora, these are example of epicomplexa. Ant amoeba or giardia or trichomonas vaginalis, they only have one host, that is man. अमीबा जियार्डिया ट्राइकोमोनस वैजिनालिस का एक ही होस्ट होता है, दैट इज मैन. द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ amoeba and ant amoeba and giardia is ingestion, and their infective form is cyst. Ant amoeba or giardia, they only have one host, mode of transmission is ingestion, and the infective form is a quadrinucleated cyst. Then second, Trichomonas vaginalis, which is a genital flagellate. It also has only one host, that is man. The mode of transmission is sexual route, and the infective form of Trichomonas vaginalis is trophozoites. Leishmania species, they have two hosts. Man is definitive host, and sandfly is the intermediate host for Leishmania species. It is a vector-borne disease, and promastigotes are the infective form for Leishmania. Leishmania have two species. Man is the definitive, and sandfly is the intermediate host. It is a vector-borne disease, and promastigotes are the infective form of Leishmania. Trypanosoma, see, definitive host for Trypanosoma cruzi and brucei is man. For Trypanosoma cruzi, the intermediate host is a bug, redovate bug, and for Trypanosoma brucei, the intermediate host is CC fly. They both are vector-borne disease. वन एक का वेक्टर है रेडोविट बग्स और दूसरे का सीसी फ्लाई. द इन्फेक्टिव फॉर्म और ट्रीपोमास्टिगोट्स. प्लास्मोडियम स्पीसीज, definitive host is Anopheles, man is the intermediate host. For Plasmodium species, that is the malarial parasite, man is the intermediate host, Anopheles is the definitive host. It is a vector-borne disease. The infective form of Plasmodium is sporozoites. Okay. Toxoplasma gondii, cat is the definitive host, man is the intermediate host. टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का डेफिनेटिव होस्ट कैट होता है. द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, इंजेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और वर्टिकल. द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, टिश्यू सिस्ट, oocyst एंड टैकिजॉइड्स. क्रिप्टोस्पोरेडियम, साइक्लोस्पोरा, सिस्टोआइसोस्पोरा का डेफिनेटिव होस्ट मैन है. ठीक है. रूट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंजेक्शन है. क्रिप्टोस्पोरीडियम के केस में ऑटो इन्फेक्शन भी होता है, एंड oocyst इज द इन्फेक्टिव फॉर्म. सो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जियार्डिया, डेफिनेटिव होस्ट सिर्फ होता है, दैट इज मैन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंजेक्शन. इन्फेक्टिव फॉर्म क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड cyst. Trichomonas vaginalis has only one host, man. Mode of transmission sexual, and infective form is trophozoites. T for trichomonas, T for trophozoites. Leishmania species, man is definitive host and sandfly is the intermediate host. Vector-borne, promastigotes are the infective form for Leishmania. Then Trypanosoma trypanobrucei, man is the definitive host. They are vector-borne, and trypomastigotes are the infective form. Trypanosoma, T for trypanosoma and T for trypomastigotes. देन प्लास्मोडियम स्पीसीज का डेफिनेटिव होस्ट एनोफिलीज होता है, मैन इंटरमीडिएट होता है. ठीक है. ट्रिपानोस्पोम प्लास्मोडियम में मैन इज द इंटरमीडिएट होस्ट, और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई में भी मैन इज द इंटरमीडिएट होस्ट. Plasmodium species Anopheles is the definitive host, man intermediate host. Mode of transmission vector-borne, and sporozoites are the infective form. Toxoplasma gondii, cat, are the definitive host, man is the intermediate host. Mode of transmission ingestion, blood transfusion and vertical.
infective form, tissue cyst, oocyst, and tachyzoids.